Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Okay. Good Good morning. morning, ma'am. Good morning. So today we are going to discuss a very important topic that is known as hypothesis. Now, why I took hypothesis today, although it is not mentioned, because there are certain tests, T test, Z test, ANOVA, chi-square test. So here you will be acquainted with the word known as hypothesis. Hypothesis is very important. You need to understand what are the different types of hypothesis and how we draw conclusion from there. And those of you who are preparing for UGC NET, various questions come from hypothesis part. So this is utmost important to all of you. Okay. Not even NET, GATE, computer science, questions come. Okay. And if you are preparing for any other exams related to research, you are definitely going to get a question from hypothesis. Okay. So this hypothesis means what? Hypothesis means there is no difference between groups, equal. Okay. There is absolutely no difference between the groups. Or you can say it is just an assumption to find out whether the particular statement is true or false. For example, I want to check that whether rainfall has a influence on production or not. So I gave a statement and I want to find out whether this statement is true or false. That is why we are going for hypothesis. I've given an example. Suppose we are a cosmetics company, let's say XYZ, and we recently launched a new product. And we want to check how many people in India will use that product. Okay, this is a case study. Now, हम लोग एक नया कॉस्मेटिक्स कंपनी खोले हैं जिसका नाम है XYZ. हम ये चेक करना चाहते हैं, हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए सोच रहे हैं. हम ये चेक करना चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट इंडिया में कितने लोग यूज करने वाले हैं. तो हमारा हाइपोथेसिस कैसे बनेगा? हमने एक अजम्पशन लिया कि प्रीवियस प्रोडक्ट का 20% मार्केट शेयर उसने कंज्यूम किया हुआ था. सो दैट विल बी माय assumption, or that on the basis of this information I'll draw my hypothesis. हमने देखा कि जो भी प्रीवियस प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया था उसने वो प्रोडक्ट 20% मार्केट शेयर एंजॉय कर रहा है. तो हम ये प्रोडक्ट भी अगर लॉन्च करेंगे तो ये वाला भी 20% एंजॉय करेगा. We have taken that as an assumption. Based on that, my hypothesis will be previous cosmetic market share is equal to observed cosmetic market share. क्यों मैंने यहाँ पे equal लिखा? Because of this. In the first statement, what I have written? I have written hypothesis means there is no difference between groups. That is the reason my null hypothesis will be previous cosmetics market share is equal to observed cosmetic market share. Okay. Similarly, null hypothesis, क्योंकि हमको disagree, we have to prove whether it is true or false. This is true, this is false. Okay. When we are taking equal sign, that is known as null hypothesis. And when we are taking a not equal to sign, that is known as alternate hypothesis. We will discuss. Now see, another example, null hypothesis means there is no difference. When we are saying no difference, that means we are putting equal to. When we are putting there is difference, means that is not equal to. Okay. समझ में आ रहा है? दो केसेस है. हमेशा नल हाइपोथेसिस में हम नो डिफरेंस निकालते हैं या फिर नो डिफरेंस में ही स्टेटमेंट को लिखते हैं. नो डिफरेंस का मतलब क्या है? इक्वल टू. कोई डिफरेंस ही नहीं है तो इक्वल टू. एंड डिफरेंस का मतलब क्या है? दैट इज नॉट इक्वल टू. अनदर एग्जांपल आई हैव गिवन. सपोज आप इंटरेस्टेड हो एग्जाम में अप्लाई करने के लिए, लेट्स से यूजीसी नेट एग्जाम. ठीक है, आपका स्कोर वहां पे कट ऑफ है, अगर आप 180 ले आते हो तो आपका नेट हो जाता है. तो व्हाट विल बी योर नल हाइपोथेसिस? योर नल हाइपोथेसिस विल बी स्कोर इक्वल्स टू 180.
And what will be your alternate hypothesis? Score will be not equal to 180. Not equal to का मतलब क्या है? हम less होगा, greater तो होगा नहीं, क्योंकि अगर greater हो रहा है तो obviously you are cracking net. In this case it will be only less than. तो हमेशा याद रखिएगा, अगर नॉट इक्वल टू में आपका बाय डिफॉल्ट एक ही साइन आ रहा है, यू आर गेटिंग जस्ट वन साइन, देन दैट इज नोन एज वन टेल्ड टेस्ट. ओके, लेकिन ये कॉस्मेटिक्स केस में आइदर इट कैन बी लेस देन भी हो सकता है और इट कैन बी ग्रेटर देन हो सकता है. प्रीवियस कॉस्मेटिक 20% था, ओके, इस बार 10 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है. So it can be either more or less. So when you have both these options, it is known as two-tailed test. किसको डाउट है पूछिए, प्लीज आस्क मी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, प्लीज आस्क मी. फंडामेंटल जिसका क्लियर नहीं हुआ है अब तक. No doubts? Anyone? Don't be shy, guys. Please ask me, okay? Fine. Let's move to the next part. Introduction to hypothesis. ये बहुत ही generalized introduction यहाँ पे दिया गया है. Just remember, when we are going for a statistical survey or research, hypothesis has to be set and defined. Mandatory. It is defined as a statistical hypothesis. It's an assumption. Okay, hypothesis actually is an assumption. Assumption का मतलब क्या है? हम उसको either true proof करेंगे या false proof करेंगे. Okay. The hypothesis testing refers to predefined formal procedures that are used by statisticians whether to accept or reject the hypothesis. हम लोग का predefined formal procedures already है. We cannot deviate. जैसे मानो t-test. t-test में हम लोग का predefined है कि sample size 30 से कम रहेगा. 30 से ज्यादा अगर हो गया तो हमको Z लेना पड़ेगा. Okay, so these are predefined procedures, you can say, and ultimately what we are trying to either accept or reject it, whatever we are trying to prove. Okay, so a hypothesis is a tentative generalization. इस बार ये question में आया था in UGC NET. Hypothesis is a tentative generalization, the validity of which remains to be tested. Okay, it is known as hypothesis. It's a tentative generalization. We do not know. The validity is yet to be tested. And how we are going to test? By taking null hypothesis and alternate hypothesis into picture, and by solving the whatever we want to prove by the formal predefined procedures. Okay, we have to check the validity. In its elementary stage, a hypothesis may become the basis for action or investigation. Okay, now just remember this definitions. A hypothesis is a proposition which can be put to test for determining the validity. Same thing, ये एक statement हो सकता है, एक proposition हो सकता है, जिसको हमको test करना है, उसका validity check करने के लिए, or else it is not perfect. Okay. Now it's an elaborated theory. Hypothesis is an elaborated theory. जिसका validity check करना बाकी है. The validity of which remains to be tested. Clear about introduction to hypothesis? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. Now it still continues. See, जब आप लोग कभी hypothesis एक formulate कर रहे हो, तो आपके दिमाग में है कि मेरे को इसको टेस्ट करना है, बट आपको इसका आउटकम नहीं पता है बिफोर हाइपोथेसिस इज मेड. जब हम हाइपोथेसिस को फॉर्म कर रहे हैं, जो भी साइंटिफिक मेथड हमको यूज करना है वो दिमाग में है. व्हाई? बिकॉज हमको उसको टेस्ट करना है, एंड वी कैन एक्चुअली कम टू अ कंक्लूजन.
So it is said that hypothesis को हमेशा हमको clear and simple रखना है, because hypothesis relies on known information and reasoning. Hypothesis को आप बोल नहीं सकते हो कि ये गलत है या correct है. It totally depends upon the person who is forming the hypothesis. ठीक है, जब कोई साइंटिस्ट लोग रिजल्ट पब्लिश करना चाहते हैं बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस, तो वो लोग क्या करते हैं, दे गो फॉर स्टेप्स. ओके, they often detail the steps they took to disprove the hypothesis as well as the steps which confirmed it. जब साइंटिस्ट लोग कोई थ्योरी या फिर कोई रिजल्ट पब्लिश करना चाहते हैं which is based on hypothesis, they make sure that they will go for sufficient cross checking of the steps. Either we are disproving it or we are approving it, depends, but they cross check it and make it confirmed. Okay, next है आपका hypothesis testing is a core and important topic in statistics. उसके बिना statistics हो ही नहीं पाता है. Now see, I have used the word null. Null hypothesis का मतलब क्या है? It is defined as a hypothesis that is aimed to challenge a researcher. That is known as null hypothesis. ठीक है? Generally, the null hypothesis represents the current explanation. हम जो भी चीज फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं या जो भी रिसर्चर टेस्ट करने के लिए कोशिश करता है, उसी का प्रॉपर स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिखने को हम बोल सकते हैं नल हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या इंक्लूड करता है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग में बहुत सारे ऐसे टेस्ट इंक्लूडेड हैं which used to determine the outcomes, the results that might lead us to either reject or accept the null hypothesis. ठीक है, हम either उसको accept भी कर सकते हैं या फिर reject भी कर सकते हैं. Clear, all of you, related to introduction to hypothesis? Yes, ma'am. Now these are the characteristics of hypothesis. 10 characteristics, very important. जैसे मैंने आपको बोला, हाइपोथेसिस हमेशा क्लियर एंड प्रिसाइज होनी चाहिए. अगर क्लियर और प्रिसाइज नहीं है तो हम वहां पे कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं कर सकते हैं. हाइपोथेसिस शुड बी एम्पिरिकल रियलिटीज, मतलब डेटा के ऊपर बेस्ड करता है. ओके, अगर डेटा हम नहीं निकाल पाते हैं तो हाइपोथेसिस निकालना डिफिकल्ट है. Hypothesis should state relationship between variables. Okay, suppose जैसे मैंने आपको बोला rainfall and production, so the relation can be built up by hypothesis. Hypothesis must be specific. ऐसे आप इतना बड़ा लंबा चौड़ा करके नहीं बोल सकते. You have to be very specific. You have to be like specific in terms of what are the variables you are taking and what you want to find out. Okay, जैसे मैंने आपको बोला clear and precise. Simple terms, it should be stated as far as possible in most simple terms. Hypothesis should be consistent with most known facts. जितने भी facts हैं, हमको ये पता है कि rainfall का production के ऊपर है, you can say effect है. So this is a fact which we are trying to prove. Okay, it should be amendable to testing within the suitable time. ये नहीं कि मैं 10 साल बाद उसको टेस्ट करूं. जो टाइम फ्रेम में आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो टाइम फ्रेम में ही आप चेक कर सकते हो. Hypothesis should be related to a body of theory. एक थ्योरी के साथ तो आप इसको रख के you have to test the hypothesis. You cannot just blindly draw anything. Okay, and it has to be supported by theoretical argumentation. एक थ्योरी आपको डेवलप करना पड़ेगा in order to justify why you have taken the hypothesis. इसलिए जब हम लोग कोई डिसर्टेशन या फिर रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं या फिर रिसर्च पेपर करते हैं, हम लोग पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम देते हैं, लिटरेचर रिव्यू देते हैं, लिटरेचर गैप निकालते हैं, रिसर्च गैप निकालते हैं, उसके बाद जाके हम हाइपोथेसिस निकालते हैं, ऑब्जेक्टिव निकालते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट ऑब्जेक्टिव वी गो फॉर हाइपोथेसिस. Okay, because why we are giving a theoretical framework here so that proper research can be done.
and hypothesis must explain the facts that gave rise to the need for explanation. हमको ये explain करना mandatory है. Please, you have to learn, all of you have to learn the characteristics of hypothesis. Clear? किसी को doubt है कोई भी hypothesis characteristic में? Any doubts? Okay, fine. Okay, Adesh, good. So आगे चलते हैं. Null and alternate hypothesis. Okay. Null and alternate hypothesis. Null hypothesis जैसे मैंने आपको बोला, no difference मतलब equal to, right? Equal to. हमारा दो hypothesis है which we try to find because हमको एक true निकालना है, एक गलत निकालना है. So if there is no difference, then that is known as null hypothesis. It is the statement about an unknown value of the parameter of a variable attribute in a population under investigation, or no difference in the values of the same parameter of the same variable in which population or two samples. इतना लंबा चौड़ा याद मत रखिए. Simple statement, null hypothesis, that means there is no difference between the variables that have been taken for the study. That is known as null hypothesis. Okay. And alternate क्या है? It means there is a significant difference between the two variables. Okay. मानो अगर हम null hypothesis को reject कर रहे हैं तो definitely हम alternate hypothesis को accept कर रहे हैं. अगर null hypothesis को हम accept कर रहे हैं तो alternate hypothesis को हम reject कर रहे हैं. Parallelly, both null and alternate cannot be equal at the same time. Cannot be like at the same time they cannot be equal, at the same time they cannot be not equal to. Okay, if one is equal, other will be not equal. If one is not equal, then the other will be equal. समझ में आया आपको? alternate और आप बोल सकते हो alternative, कुछ भी आप बोल सकते हो. Clear about this? Any doubts? Yes, ma'am. Okay, this is pure fundamental of hypothesis. Okay. Now steps of hypothesis. Okay, हम लोग अभी steps of hypothesis पढ़ेंगे. What are the different steps that we need to go through? पहला, कोई भी स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा या फिर कोई भी केस स्टडी, जैसे मैंने आपको बोला कि आप एक कंपनी हो, कॉस्मेटिक्स कंपनी हो XYZ, आपको एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है मार्केट में, आप टेस्ट करना चाहते हो कि ये प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में एक्सेप्ट होगा कि नहीं. तो ये केस स्टडी आपको दिया गया है, उसमें से आपको निकालना पड़ेगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ ये काम करेगा या नहीं करेगा. So that is known as formulation of hypothesis. Formulate the hypothesis, right? तो जब हम formulate करते हैं, we normally take mu. Okay, here see mu, और आप बोल सकते हो population mean, इसको हम बोलते हैं mu. We normally denote or write in this way. Null hypothesis हो जाए, क्योंकि population mean हम लेंगे ना, इतना sample size तो हर एक बार individual calculate करना difficult है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग उसका mean निकाल देते हैं and mean को ही हम statement format में डाल देते हैं. तो हमारा null hypothesis क्या होगा? mu equals to mu 0. ठीक है, क्योंकि there is no difference. And alternative hypothesis क्या होगा? mu is not equal to mu 0. अगर नॉट इक्वल टू है तो आइदर वो लेस देन होगा या फिर ग्रेटर देन होगा. फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस. फिर हम क्या करेंगे? टेस्टिंग द हाइपोथेसिस. फिर हम क्या चेक करेंगे? वेदर इट इज वन टेल और टू टेल. ओके, अगर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ग्रेटर है और स्मॉलर है, मतलब सिर्फ एक ही मार्क आ रहा है, आइदर इट कैन बी ग्रेटर
और इट कैन बी स्मॉलर, और पैरेलली एक टाइम पे नहीं आएगा दो सिंबल्स, देन वी आर यूजिंग अ वन टेल टेस्ट. अगर we are not sure that whether it is or both it is coming greater than and smaller than, एक साथ ही आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, टू टेल टेस्ट. जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, कॉस्मेटिक्स का जो मार्केट शेयर है वो 30% भी आ सकता है इस बार, 10% भी आ सकता है, वी डोंट नो. सो उस केस में हम उसको बोलेंगे टू टेल टेस्ट. फिर वहां पे काम खत्म नहीं हो रहा है, हम लोग सिग्निफिकेंस लेवल जाके चेक करेंगे कि हम ये वाला चीज एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करेंगे. सो वंस द हाइपोथेसिस इज फॉर्मुलेटेड, in order to test the validity, we will take a significance level and we will find out. Okay. And we will find out whether we are going to accept or reject the statement. So normally क्या क्या significance level choose होता है, 5%, 1% और 10%. but कोई भी value आप ले सकते हो between 0 to 1. Okay, 0% मतलब 100%. इसका मतलब क्या है, 95% significance level. इसका मतलब है जो आपने बोला 5%, 5% is nothing but 95% confidence level, 5% significance level. We interpret it like this. This is called as 95% confidence level and it is known as 5% significance level. इसका मतलब क्या है 5% significance level? इसका मतलब है कि हम जो भी डेटा, जो भी रिजल्ट्स हम निकाले हैं, that is, there is a chance that 5% error will be there and there is a chance that 95% it will be error free. इसलिए हम लोग वैलिडिटी चेक करने के लिए we are taking significance level. Okay, clear? Understood the purpose of significance level? Because we are, and हमेशा एक perfect researcher अगर आप हो तो you must check your research on 1% significance level. 1% मतलब सिर्फ 1% एरर होने का चांसेस है, 99% आपका डेटा एरर फ्री है. समझ में आया आप लोगों को? एनी डाउट्स? Yes, ma'am. No doubt, ma'am. ओके ओके फाइन. आदर्श, आकांक्षा, इप्सिता, मनीषा, मुस्कान, बोलिए प्लीज. आई नीड सम आंसर्स फ्रॉम Yes, यू. ma'am. Clear. Clear, ma'am. ओके फाइन. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वी विल डिसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला अगर सैंपल साइज 30 से छोटा है तो हम टी टेस्ट अप्लाई करेंगे, अगर सैंपल साइज 30 से बड़ा है तो हम जेड टेस्ट अप्लाई करेंगे. फिर हम एनालाइज करेंगे जो भी सैंपल डेटा है, वैल्यू निकालेंगे, फिर हम टेस्ट स्टैटिस्टिक को फाइंड आउट करेंगे. नाउ व्हाट इज टेस्ट स्टैटिस्टिक? ओके, टेस्ट स्टैटिस्टिक इज इक्वल टू statistic minus parameter divided by standard deviation of statistic or standard error of statistic. Parameter का मतलब क्या है, which the value which is appearing in the null hypothesis. Statistic is the point estimate of parameter. ये आप भूल जाओ. Okay, I'll say in a short thing what is known as test statistic. I'll say that, don't get confused. Just remember we are computing the test value. हम एक value निकालेंगे. ओके, द फाइनल वैल्यू, एक पॉइंट में कुछ तो वैल्यू आएगा, राइट? देन वी विल फाइंड आउट पी वैल्यू. व्हाट डज पी वैल्यू? ये एक प्रोबेबिलिटी है कि ये 1 टेल टेस्ट है या 2 टेल टेस्ट है. ओके, फिर उसके बाद वी विल गो फॉर इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स. ओके, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स में क्या होगा, हमेशा याद रखिए अगर कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टैबुलेटेड वैल्यू तो आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है. अगर आपका कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन टैबुलेटेड वैल्यू तो आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है. कभी कभी बच्चों को ये याद नहीं रहता है, हमेशा याद रखिए आपके अल्फाबेटिकल सीरीज में कौन सा लेटर फर्स्ट आता है, सी फर्स्ट आता है, टी लास्ट को आता है. तो अगर सी फर्स्ट में आया और सी छोटा है देन टैबुलेटेड
then we are accepting the null hypothesis. Okay, understood? So this is the flow diagram for hypothesis testing. Understood or not? Yes, ma'am. मैम लास्ट वाला फिर से थोड़ा बताइए. हम लोग का एक क्या, बिकॉज हाइपोथेसिस टेस्टिंग जब हम करते हैं ना, वी हैव अ टेबल. जैसे टी टेस्ट अगर हम अप्लाई किए, सो वी हैव टू चेक द टी टेबल. देयर इज अ टेबल दैट वुड बी गिवन. ओके, जब हम टी टेबल देखेंगे तो वहां पे हमको एक वैल्यू मिलेगा और हम कैलकुलेशन से एक वैल्यू निकालेंगे. अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू टैबुलेटेड वैल्यू से छोटा है, कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन द टैबुलेटेड वैल्यू, तब हम उसको बोलते हैं एक्सेप्टेड. नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड. अगर कैलकुलेटेड वैल्यू आपके टैबुलेटेड वैल्यू से बड़ा है, तो उस केस में हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है. अंडरस्टूड? दिस इज अ थंब रूल फॉर एनी रिसर्च यू डू थ्रू आउट योर लाइफ टाइम. अंडरस्टूड? यस मैम. यस कोई मैम. भी आप रिसर्च करो, कभी भी करो, ये थंब रूल है. यू कैन नॉट गो अवे फ्रॉम दिस. आप पीएचडी करोगे आगे चल के, या फिर कंपनी में आपको रिसर्च दिया जाएगा करने के लिए, मार्केट रिसर्च में जा रहे हो, डेटा एनालिसिस में जा रहे हो, when you are going for hypothesis testing, this is the rule that you have to follow no matter what in which line you are going. Okay, acceptance and rejection region देखिए आप लोग. एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? सी इन दिस डायग्राम. ओके, ये एक बेल शेप्ड कर्व है. सो हम लोग नॉर्मली क्या लेते हैं, जहां से शुरू होता है पहाड़. ओके, लेट मी से इन दिस वे. ये पूरा का पूरा आपका एक्सेप्टेंस रीजन है. मतलब इसके अंदर अगर वैल्यू आएगा आपका नल हाइपोथेसिस का, जो भी वैल्यू निकलेगा टेस्ट स्टैटिस्टिक का, that will be accepted. इसके बाद में जो सब आएगा either left side or right side, then that those are going to be rejected. Okay, clear? यस मैम. Okay, ये जो वैल्यू है, okay, this graph, this point which separates acceptance and rejection region, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू. क्रिटिकल वैल्यू, the value of the sample statistic that separates the regions of acceptance and rejection is called critical value. Okay, अगर आपका probability null hypothesis true है and it is falling under this acceptance region, then reject. अच्छा, ये वाला मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ, वो समझ में आ गया? Now see, there are two tests. टेस्ट स्टैटिस्टिक जैसे मैंने आपको बोला था, दो कैटेगरी है, एक है पैरामेट्रिक टेस्ट और एक है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. Why we are saying parametric test? Because those are derived from interval and ratio measurements. आप लोग तो scale पढ़े नहीं हो. Some of you have studied, some of you have not studied. There is the topic is known as measurement of scale. There are 4 types of scales. एक है nominal, एक है ordinal, एक है आपका interval और एक है आपका ratio. नॉमिनल में आप कुछ कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स एक मीन का कैलकुलेशन कर सकते हो. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे नेम्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन. नेम को देख के हम उनको स्केलिंग करते हैं, मार्किंग करते हैं. ओके, नॉमिनल. ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर में सजा लेंगे. जैसे क्रिकेट में आप लोग देखे हो, 11 खिलाड़ी हैं, 12 खिलाड़ी हैं, तो उनको एक ऑर्डर दिया जाता है, उनके शर्ट में लिखा होता है, सपोज फॉर एग्जांपल महेंद्र धोनी 5, सो दे कम इन अ ऑर्डर. इंटरवल में हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन 0 इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन. 0 वैल्यू का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. रेशियो में हम सब कुछ कर सकते हैं, इंक्लूडिंग 0 कैलकुलेशंस, और एवरीथिंग कैन बी डन इन द रेशियो स्केल. So parametric test हम किसको बोलते हैं? See, this I have done very short. I can send you videos
जहां पे मेजरमेंट ऑफ स्केल का पूरा लिखा हुआ है. इट्स ऑलरेडी अपलोडेड इन द यूट्यूब, यू कैन चेक दैट. पैरामेट्रिक टेस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है बिकॉज ये डेटा, दीज डेटा आर डिराइव फ्रॉम इंटरवल एंड रेशियो मेजरमेंट्स. बट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर नॉट सो पावरफुल बिकॉज these are derived from nominal and ordinal data. सिंपल, इनका कोई अस्तित्व नहीं, मतलब है बट कोई मायने नहीं रखता है. हम लोग अपने कन्वीनियंस में वो डेटा कलेक्ट करते हैं, राइट. सो हाउ यू आर फाइंडिंग आउट चॉइस ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक? पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा पॉपुलेशन नॉर्मल है कि नहीं. सपोज मैं अभी कोविड पेशेंट के ऊपर काम करूंगी, मैं यहाँ से इंडिया से एक लूंगी, तो सऊदी से एक लूंगी, तो अफ्रीका से एक और डेटा लूंगी. So I have to check whether whatever population I have taken is correct or not. अगर नहीं, हाँ, उसके बाद हम क्या चेक करेंगे? हम चेक करेंगे कि सैंपल साइज 30 से छोटा है या 30 से बड़ा है. अगर पॉपुलेशन नॉर्मल है तो हम क्या निकालेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे. अगर हमें पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं मिला, उसके बाद जाके हम चेक करेंगे एन क्या है, एन का साइज क्या है, लेस देन 30 और मोर देन 30. अगर लेस देन 30 है तो हम टी टेस्ट यूज करेंगे, अगर मोर देन 30 है तो हम जेड टेस्ट यूज करेंगे. उसके बाद हम चेक करेंगे यूज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट और जेड स्टैटिस्टिक, क्योंकि सैंपल साइज इज मोर देन 30. बट अगर आपका पॉपुलेशन पहले से ही नॉर्मल निकल के आ गया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद आप सैंपल साइज चेक करोगे. अगर 30 से छोटा है तो आप टी टेस्ट यूज करोगे, अगर 30 से बड़ा है तो आप जेड टेस्ट यूज करोगे. दिस इज द फिगर ऑफ चॉइस ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक. ओके, फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यहां तक सबको समझ में आया या किसी को डाउट है? प्लीज आस्क मी. Because in the next classes when I will be teaching you t-test, z-test, chi-square, ANOVA, I won't be going into detail about all these things. We will just see calculated value, tabulated value, and then we'll move to the final answer. Okay. So अगर किसी को doubt है, repeatedly I am saying please ask me. Don't get confined to yourself only. No doubt? No, ma'am. No, ma'am. Okay, fine. Yes, ma'am. Just a minute. Okay, sorry, there are some issues in my, just a minute. कहाँ गई थी मैं? ओके. Now can you all see the screen properly? Yes, ma'am. Okay. Fine. So type 1 error and type 2 error, very important. Please pay focus what I am saying, what I'll say right now. टाइप 1 एरर क्या है? आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होने वाला था, लेकिन आपने गलती से उसको रिजेक्ट कर दिया. समझ में आया? इन फाइनल आंसर द null hypothesis was supposed to be true, but you rejected the null hypothesis. उस केस में आपका टाइप 1 एरर आता है. टाइप 2 में क्या है? आपको नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना था, बट आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया. दैट इज नोन एज टाइप 2 एरर. उसको बोलते हैं बीटा. A type 1 error occurs when the researcher rejects a null hypothesis when it is true. Okay. The probability of committing a type 1 error is called the significance level. And this probability is also called alpha
and is denoted by like this symbol. Type 2 error क्या है? Occurs when the researcher fails to reject a null hypothesis that is false. हमको originally उसको false करना था, but हमने false के बदले उसको accept कर लिया, तो गलत है ना? The probability of committing a type 2 error is called beta and is often denoted by beta. The probability of not committing a type 2 error is called the power of the test. Okay, these are short questions. Significance level समझ में आया? जो error के बाद मैं बोल रही थी, 5%, 1%, 0 से 9 तक आप कुछ भी value ले सकते हो, 10 तक. उसका मतलब क्या है? मतलब हमको null hypothesis accept करना था, हमने reject कर लिया. That is why we are keeping 5% significance level. उसका मतलब क्या है? 95% of my data is correct. Confidence level. Are you relating? Are you able to relate? What am I trying to say? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. तो ओरिजिनली नल हाइपोथेसिस के केस में अगर ट्रू है तो हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, बट हम लोग उसको रिजेक्ट कर लेते हैं, इसलिए ये एरर है. सिमिलरली ओरिजिनली हमको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को फॉल्स करना है, रिजेक्ट करना है, बट हम उसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसलिए रॉन्ग डिसीजन. So just remember, आपको null hypothesis accept करना था, आपने उसको गलत कर लिया तो type 1 error. आपको null hypothesis को reject करना था, but आपने गलती से उसको accept कर लिया, it is known as type 2 error. Type 1 error का जो probability है that is known as significance level. Type 2 का जो probability है that is known as beta. And अगर हम कोई problem, कोई error ना करें, not committing any error, that is known as power of the test. Understood? Fine. Okay. These are the formulas. Not required for you people, but just have it. Not required actually. Because हम लोग दूसरे जगह पे use करेंगे, जब हम t-test, z-test हम पढ़ेंगे, तब I'll be using those formulas. As of now, okay, z-test I can give you the formulas. You people can write it, and I'll give you short questions, and you can practice it. Hypothesis testing for single population mean जब आपका sample size 30 से ज्यादा है, तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं. पहला केस है स्टैंडर्ड डेविएशन पता है हमको, पॉपुलेशन भी नॉर्मल है एंड इन्फिनाइट है, तब z टेस्ट का क्या फॉर्मूला होगा? x बार मतलब मीन माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n, जितना भी आपका डेटा है. सेकेंड केस में क्या होगा? आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता नहीं है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन नॉर्मल है एंड इन्फिनाइट है. उस केस में आप क्या करोगे? मीन माइनस पॉपुलेशन मीन दैट इज म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल. क्योंकि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मालूम नहीं है, सैंपल का तो पता होगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n. केस 3 में if standard deviation of the population is known, population is normal and finite, then z test कैसे हम निकालेंगे? ओके, पता है हमको स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, ये दोनों सेम है. यहाँ पे पॉपुलेशन इन्फिनाइट है, यहाँ पे पॉपुलेशन फाइनाइट है, ओनली डिफरेंस. सो उस केस में हम z टेस्ट कैसे निकालेंगे? mean minus population mean mu divided by standard deviation of population divided by square root of n into 1 divided by square root of n minus n divided by n minus 1. All the short forms are given. So this mean means sample mean, this mu means population mean, n का मतलब है sample size छोटा वाला, बड़ा n का मतलब है total population. This means standard deviation of the population. This one stands for standard deviation of the sample, and the formula is summation x minus x bar square divided by n minus 1. Okay, these are the formulas for z test.
Okay, Ipsita, no problem. I'll say hypothesis testing for difference between two population mean. दो पॉपुलेशन मीन है यहाँ पे. इस केस में हमारे पास सिर्फ एक ही पॉपुलेशन मीन था, बट यहाँ पे दो पॉपुलेशन मीन्स है एंड दो स्टैंडर्ड डेविएशन है. तो उस केस में हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे होगा? तो पहला केस है मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन पता है. When two samples are drawn from different population, तब हम Z test कैसे निकालेंगे? This is the formula. And case 2 में when two samples are drawn from the same population, and if standard deviation from population 1 is equal to standard deviation from population 2, then Z test आप कैसे निकालोगे? इस केस में सैंपल दो डिफरेंट पॉपुलेशन से पिकअप किया गया था. इस केस में सैंपल हम एक ही पॉपुलेशन से पिक कर रहे हैं. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर जेड टेस्ट? केस 3 में क्या है? डिड यू राइट द फॉर्मूलास? हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फाइन. केस 3 में हम कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे? When two samples are drawn from different population, मतलब दो population से sample आया है, and if standard deviations of this population 1 and population 2 is not known, तो हम उस केस में क्या करते थे? Standard deviation of sample we take and we find the formula, right? And standard deviation का formula भी हमने आपको दिया हुआ है of sample. See, all these values would be given to you. Your work is just to apply and find out the answer. आपको x दिया गया होगा, आपको x bar 1 दिया गया होगा, n दिया गया होगा, right? x bar 2 दिया गया होगा. आपको बस निकालना है डाल के फॉर्मूला. केस 4 में क्या है? सेम पॉपुलेशन से हम ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन हमको मालूम नहीं है. Okay, so we have to find out standard deviation of the sample and then we have to go for the answer. So this is the formula, and hum standard deviation kaise of the sample, how to find out, that is also given. The formula is given. Okay. Yes. T-test. Hypothesis testing with small sample T-test. N is less than equal to 30. आप लोगों के एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे. क्वेश्चन आपको फॉर एग्जाम्पल कभी कभी दिया जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन पता नहीं है, पॉपुलेशन लेकिन नॉर्मल है, इन्फिनाइट है, फाइंड टी टेस्ट. ओके, एंड द वैल्यूज विल बी गिवन. दिस विल बी गिवन, दिस विल बी गिवन, this might not be given. Instead of this, we can give you x bar, x value, and n would be definitely given. So you have to apply the formula and then find out the result. समझ में आया? केस 2 में क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का पता नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन नॉर्मल है और फाइनाइट है. So you have to find out t test. And where you will find out t test? If the sample size is 30 or less than 30. There you are going to find out T. If the sample size is more than 30, then you have to find out Z. बार बार मैं ये चीज बोल रही हूँ, don't do any mistake in exams. नेट एग्जाम हो, गेट हो, जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, आगे चल के एमटेक के लिए प्रिपेयर करोगे, रिसर्च का एग्जाम्स दोगे, डिपार्टमेंट का एग्जाम है, so please do not do any mistake in this. Next is hypothesis testing for difference between two population mean. अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन हमको पता नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन नॉर्मल एंड फाइनाइट है, तब हम टी टेस्ट यूज करेंगे. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? x bar 1 minus x bar 2, मतलब मीन ऑफ 1 minus मीन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय summation x bar 1 minus x1 minus x bar 1 square plus x2 plus x bar 2 square divided by n1 plus n2. आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो. Which one will be easy for you? You can apply that. Okay. Now, what is the difference between parametric test and non-parametric test? जहां पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है
वहां पे हम पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करते हैं. आई सेड ना, वी हैव टू फाइंड आउट वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल और नॉट. सो अगर आपका नॉर्मल निकला तो वी विल यूज पैरामीट्रिक टेस्ट. अगर आपका नॉर्मल नहीं निकला एंड स्क्यूड निकला like this, you will get a curve like this, then you will be using a non-parametric test here. Parametric test is applicable for quantitative data. Non-parametric test is applicable for qualitative data. Parametric test हमारा interval and ratio scale पे ज्यादातर काम करता है. Non-parametric test आपका nominal and ordinal scale के ऊपर based है. पैरामेट्रिक में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करके हम पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं. क्वेश्चंस हैज मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, देन वी यूज पैरामेट्रिक टेस्ट. एंड इन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्वेश्चन हैज परसेंटेज और proportion, then we use non-parametric test. Parametric test is definitely very powerful, non-parametric test less powerful. Understood everyone? Yes, ma'am. Okay, now Ipsita had asked me a question, ma'am, please explain type 1 and type 2 error. Okay, for example, जैसे मैंने आपको बोला, कॉस्मेटिक्स का कंपनी है मेरा, मैं कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली हूँ. मेरा पहला जितना भी प्रोडक्ट मैं लॉन्च की हूँ तो वो 20% मार्केट शेयर एंजॉय कर रहा है. तो मैंने क्या देखा कि मैं अगर इस बार भी लॉन्च कर दी, मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर दी एंड मेरा 20% आ गया मार्केट शेयर, द न्यू प्रोडक्ट एक्सेप्टेड और गॉट 20% मार्केट शेयर. इसका मतलब क्या है? मेरा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है, करेक्ट, बट मैं एक्सेप्ट करने के बदले आई एम रिजेक्टिंग इट. So what will happen? I did an error here, right? I should accept because this 20 and this 20 is equal. But instead of accepting, what I did, I rejected it. That is known as type 1 error. Similarly, मेरे को यहाँ पे 10% आ गया. तो मतलब क्या है? मेरा null hypothesis reject हो गया. But unfortunately, I accepted it. So what happened? An error took place. That is known as type 2 error. Clear, Ipsita? Any doubt, anyone in the hypothesis part? No, ma'am. Okay. ma'am. Thank you then. So next class, see, t-test and z-test formulas I have given. What I can do is I'll give you short questions and you can apply your own, you just apply your own mind and try to solve those questions. Okay, कुछ extra question नहीं दिया जाएगा, आपको सारा values दिया जाएगा. आपका काम है, you have to find out which formula you are going to use and you are going to solve it. Okay, so t-test, जब आपका सैंपल साइज 30 से छोटा है या फिर 30 है, वहां पे आप टी टेस्ट यूज करोगे. जब आपका सैंपल साइज 30 से ज्यादा है, नॉट 30 अगर है तो आप टी यूज करोगे. 30 से ज्यादा है, देन यू विल यूज जेड टेस्ट. ओके, एंड अकॉर्डिंगली अप्लाई द फॉर्मूलाज. क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. So just be online. Thank you. Just be online. PG students, you please can leave. PG Department of ITM